Assalamu alaikum viewers, I'm Zubia Irfan. Welcome to another show of CxO Talk. As you know, it's a knowledge sharing platform for all the C-level across the Pakistan and around the globe. Every time we invite some interesting personalities in our show. Today we are honored to have Mr. Zafar Ahmad with us. Mr. Zafar Ahmad is the co-founder and CTO at BITLogix. With over 20 years of experience in enterprise applications, cloud systems, and business automations, he leads innovative tech solutions across industries. So let's meet and greet Mr. Zafar. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, and thank you so much, Zubia, for providing me an opportunity to talk about myself, my company, and obviously it always be nice to get connected with people, especially I would say the camaraderie of the technology, techs. I mean, all these peoples. I mean, need to be stay connected to each other. Great, great. So, Mr. Zafar, could you please give a brief introduction to our viewers about yourself and your role within our organization? Okay, so uh, as you mentioned my name, I started my career in 2001 Right. from a small company which was owned by God Filters. Then I joined Systems in 2003, DIT 24, back to Systems, and ultimately in 2005, I when I was looking to join another company, and in the meanwhile, me and my friend and I, we decided to go for our own startup, which we started with the name of Binary Information and Technical Solution. And when we made it private limited in 2008, we had to change our name because of uh, uh, because the similar name was not available. So we ended up with BITLogix Private Limited, formally in 2008. Yeah, during Right. that period, I worked for mainly for the enterprises, and I feel, I mean, myself fortunate that whatever I did so far, I got an opportunity to work for the large scale projects that includes apparel, uh, U.S. banking sector, stock exchange, and then large scale retailers as well, like Asda, Walmart, Woolworth Australia. That obviously, I mean, give me an opportunity to learn a lot about enterprise development. And my Right. role, yeah, yeah, my role as I'm one of the co-founders of this company, and also being a tech guy, I chose myself to be a CTO of this company. And mainly, of course, I mean, my primary role is to keep my tech team up to the mark. I do not remain involved all the time with the delivery side of it. But being a co-founder, obviously, I need to get involved in other stuff as well. That includes, but not limited to, the financial side, budgeting, and other things as well. Great, great. So, what inspired you to pursue a career in enterprise application development? So when I was in eighth standard, uh, it is, I would say, I mean, it was 1992. So 33 years ago, I I I started using electronics circuits, building electronic circuit, which was my primary interest. And I also started. I wanted to be an industrial automation where the software and hardware play together to complement each other. बट उस वक्त जो भी वो आपकी इन्वायरमेंट थी, मैंने वो 6 मंथ का कोर्स भी किया, बट आई कुडंट फाइंड अ डिग्री अराउंड that particular expertise which I was trying to build. So ultimately I ended up with the software, which obviously, I mean, helped me to also learn more about hardware as well. But as the career moves, ultimately, as per the market demand, we ended up doing with the software part only. राइट राइट सो लीडरशिप ने आपकी सक्सेस में क्या रोल प्ले किया
और आपका क्या ख्याल है कि लीडरशिप जो है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी टीम के ऊपर? अब लीडरशिप की बहुत सारी, अब हम कह सकते हैं कि टाइप्स हैं यहाँ पे, बट बीइंग अ टेक गाय who love to you could say who love to learn every day and trying to being up to date, that gave राइट, me an advantage कि मैं टीम के साथ, जब मैं अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे उनके साथ वो, जब वो मेरे से बात कर रहे हैं, तो दे फील दैट आई मीन वी कुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। एट द सेम टाइम आई मीन आपको एक मैसेज कन्वे करना, और आपको वो डिलीवरी को, जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी डिलीवरी का पीस आपके पास आया, वो उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान हो जाता है आपके। सो आई बिलीव, आई मीन क्योंकि मेरी कोई उस तरह बैकग्राउंड नहीं थी, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो वो के बस आपकी बिजनेस साइड, या मैंने वो एक्सपोजर, कोई इनहेरिटेड एक्सपोजर भी नहीं था वो बिजनेस लीडरशिप का। So whatever I learned, that was from being a tech guy, which ultimately ended up with the tech leadership and converted to a business leadership, या आपकी जो भी बाकी जो भी leadership का areas है, वो भी उसके साथ ही cover हो गए। सही, But mainly, सही। yes, I would say, I mean, the tech being, I mean, by keeping myself up to date with technology, that gave me an advantage over, over the years. Right, right. So, what are the biggest challenges in designing enterprise level applications today? Yeah, if we first, I mean, try to learn, I mean, what is called enterprise application today, क्योंकि हम बहुत सारे देखते हैं, फ्रंट एंड्स भी बन रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बन रही हैं, जी, that जी। could be part of an enterprise, but that is not enterprise level application. हम्म। आपको जब आप व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्राइज एप्लीकेशन, आपको ये भी देखना है कि उसमें डाटा आ किस तरह का है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, हार्डवेयर आपको कितना बड़ा स्केल करना पड़ेगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग एक कंपनी का जो भी एंटरप्राइज है, उसका जो एंटरप्राइज पोर्टफोलियो अभी किस जगह पे, because being an enterprise, you cannot all of sudden replace all of the existing technologies with the new latest greatest technologies all of sudden. There are, I mean, a much more, I mean, that cost would be, I mean, बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट हो सकती है अगर हम ये इस तरह के कोई भी अब्रप्ट डिसीजन को लेने की कोशिश करें। तो जब आप एंटरप्राइज में काम करते हैं, तो जो मेन आपके पास देखना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक स्टैक है आपके पास, वो क्या चल रहा है, आपकी सिक्योरिटी की, डाटा गवर्नेंस की, आपकी जो कंप्लायंस है, उसके साथ जो भी आप सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हो, वो उसमें ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट्स ऐड करता है। फिर आपका जो इंटरनल स्टाफ है, बिकॉज एवरी एंटरप्राइज, regardless how many vendors do they work with, उनके पास ऑलवेज एक इंटरनल टीम होती है हु इज रिस्पॉन्सिबल आफ्टर द हैंड ओवर मेंटेनिंग दोज एप्लीकेशंस इंटरनली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आपने उनका भी साथ देखना है कि उनका करंट लेवल क्या है, बिकॉज दे आर हम्म। मोस्टली दे आर मेंटेनर्स, सो वो शायद वो आपकी टेक्नोलॉजीज में उस तरह डेली में बेसिस पे टेक्नोलॉजी को लर्न करने में या एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिजाइन करने में इन्वॉल्व नहीं होते। तो देयर जी, ट्रेनिंग पार्ट एंड टू अपलिफ्ट देम टू सम एक्सटेंट, ऑब्वियसली, आई मीन, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट करते हो, इवन यू डू इट एन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, you end up with the new learnings as well, and those learnings you try to apply into the, I mean, for the next application, whatever you develop for the same client or for another client. So all these factors, and then आपका जो last part which I consider significant in enterprise जी, application, जी। कि जो आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, उससे ज़्यादा आपका मेंटेनेंस ओवर द ईयर्स, जो आपकी मेंटेनेंस उस एप्लीकेशन के ऊपर होनी है, दैट वुड बी अ मेजर राइट। once you complete the initial development of it. तो जो भी आप अपना जो कोड लिखो, that is maintainable to the maximum extent, ताकि उसको मेंटेन करना, उसको चेंज करना वो इतना आसान हो कि it does not affect if you make a change to one form or one file, you could say, तो वो आपका किसी और जगह पे जाके वो ऑल ऑफ सडन एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट ना कर दे, रिपल इफेक्ट, कि जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन ही आपकी क्रैश करने लग जाए, एंड देन फोर हम्म। फाइव need to sit together to solve that problem.
तो ये अब आपको एंटरप्राइज में देखना पड़ता है। तो आपका जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन में लोग, इफ एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, लोगों का आना किसी हद तक कम हो रहा है। उसकी शायद वजह ये जी। है कि स्पेशलाइजेशन, ऑब्वियसली वी ऑल नीड टू गो मूव टूवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में अब फ्रंट एंड डेवलपर या जो आपका वेब डेवलपर है, ही और शी फोकसेस ऑन द front end development without knowing that how that data would reach to the front end. All they need to know is that, I mean, कि मेरे पास ये डाटा आएगा और ये मैंने वापस भेजना है, and it would at this screen or this module will start working automatically. And same for the middle tier developer or the API developer, they mostly care कि कैसे वो अपने वो backend से database से data उठाना है, how do we need to process and make it compatible to the front end आपका, वो इस part पे focus कर। ठीक है, जब एंटरप्राइज डेवलपमेंट में आपके पास सारे कंपोनेंट्स, आपको एक हाई लेवल आपको या 360 व्यू आपको उसका देखना पड़ता है, दैट इज, आई मीन, मच मोर इम्पोर्टेंट जब आप कोई भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं। एंड दैट इज व्हाई, आई मीन, दोस प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट शायद उस तरह, यानी अगर ना भी ज़्यादा हो, बट ओवरऑल द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कंपेयर टू एन बिल्डिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ स्टार्टअप, दैट टेक्स मच मोर टाइम कंपेयर टू building something from the scratch. Right, right. So, what's your approach to managing and mentoring high performing tech teams? Okay, so I believe that BITLogix is blessed with uh, high performing tech team. And the reason, as I mentioned at the start as well, that being a tech guy, I try to keep myself up to date all the time. In order to do that, and I also loved, actually, I mean, I still love training tech people. I voluntarily work with Microsoft and other institutions as well, to train their people, organizations, institutions, including lawyers at some stage as well, to get introduced with the technology that solves their problems. To that advantage, I mean, that continuous learning and keeping myself up to date, that gave me an advantage while dealing with the tech teams. And also, what we do कि आपका जब भी कोई project start होता है, we try to add fun part. So one part could be, one way of adding fun part to the project is कि आपको किस दफ़ा हम इस टेक्नोलॉजी, इसमें ये एक नई टेक्नोलॉजी या एक न्यू वे ऑफ वर्किंग, अ न्यू फ्रेमवर्क हम लोग इंट्रोड्यूस करें। तो जो भी Right, आपके जो टेकी लोग होते हैं, वो उनको ये इस तरह काम करना, ऑलवेज दे ऑलवेज लुक फॉर समथिंग न्यू, एंड दैट एड्स अ मोर एनर्जी टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर। right, right. हाँ, एक So, दफ़ा एक, या सॉरी, इसी में एक मैं वो थोड़ा सा, आप कहें कि वो थोड़ा सा एक जी जी प्लीज। वाक्य भी ऐड करूँ, वो हमने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया, वेयर 35,000 यूजर्स connect in first 2 hours to the application with the 7,000 concurrent users at the same uh, time, you could say same on the same second. तो वो उसके हमने जो भी टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ की, हमने वो एज्योर कॉस्मोस डीबी यूज़ की। वो जब उसकी ओरिएंटेशन हो रही थी आपके जो क्लाइंट के साथ कि ये क्यों टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह सारा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो मैंने उसमें मेंशन किया कि इसकी जो फर्स्ट रीज़न है वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम ये बाकी इसके प्रॉस देखें। तो जब वो सेशन एंड होने वाला था, उन्होंने कहा कि पहला जो है वो, उसकी पहली रीज़न क्या थी। तो उस पे मैंने उनको बताया कि वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, वी वांटेड टू लर्न it. So, and obviously it gave you advantage, and also it gave us advantage as well, कि आपने जिस तरह हमने इसको implement किया and utilize, we that was amazing. राइट, राइट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो, आप अपनी कुछ हॉबीज, कुछ इंटरेस्ट हमारे साथ शेयर करेंगे? वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह करते हैं आप? वर्क लाइफ बैलेंस का तो पता नहीं,
एक तो ये सबसे बड़ा, आप ये कहें, ये थोड़ी स्टिल आई कंसिडर एज अ प्रॉब्लम, बट हॉबी वाइज आई लव टेकिंग लैंडस्केप फोटोज। एंड आपके जो टॉडलर से आपके 6 years के दरमियान के जो बच्चे होते हैं, उनके जो आपके जो स्टूडियो शॉट्स, हेड शॉट्स और लैंडस्केप्स, ये मुझे बहुत शौक है। और वो कैमरा गियर्स वगैरह वो सारा कुछ मेरे पास हैं भी। वो तो वेन एवर आई गो ऑन ट्रिप आई गो विद द हैवी कैमरा किट एज राइट। वेल। तो या उसके अलावा जो है, हाँ मुझे हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था, बट ऑब्वियसली आई डू नॉट गेट मच टाइम टू स्पेंड ऑन इट, कि आपको शुरू से स्क्रैच से आप सर्किट्स बिल्ड करो, उनको इंटीग्रेट करो। बट आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन होम ऑटोमेशन फोरम्स एज वेल, कि आपके जहाँ पे आप डिफरेंट हार्डवेयर्स को, जो भी आपके होम ऑटोमेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको आप यूटिलाइज करो बाय एडिंग अ फ्यू स्क्रिप्ट्स to send message from one device to another device, so they all somehow they become compatible to each other. And lastly, bonsai plants का बहुत शौक रहा है मुझे, which is somehow I couldn't much follow, क्योंकि पाकिस्तान में import आपके लिए प्लांट्स की बंद है, जो कि आपके imported plants होते हैं। एंड ऑल्सो इट्स टाइम टेकिंग, कि आपको एक प्लांट ग्रो करने में, उसको शेप अप करने में, उसे स्मॉल मिनिएचर रखने में आपको 10-12 साल भी लग जाते हैं। सही सही। So, Mr. Zafar, how do you see emerging technologies like Snowflake and Databricks shaping the future of data processing? आई वुड से इट इज ऑलरेडी बीन शेप्ड वेल। आपको Right, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी अगर हम इसको देखें 2001, 2002 और इवन अब until 2005 एज वेल, विदाउट अगर हम वो क्लाउड में या जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर थे लाइक रैक स्पेस वगैरह जो भी थे, जहाँ पे आप अपनी वीएम्स उनके पास आप होस्ट कर लेते थे, the one of the biggest challenges was to scale a solution according to your requirements of data processing. So we right, mostly ended up with processing the structural or semi-structural data, कि आपने एक डेटाबेस से डाटा उठाया, या आपने एक्सेल से या सीएसवी से डाटा उठाया, उसको प्रोसेस किया, एंड यू एंडेड अप विद दी एक और स्ट्रक्चर, जैसे वेयर हाउस कह लें या डाटा मार्ट्स आपने बना लिए, जिसके ऊपर आपने अपनी रिपोर्ट्स या इनसाइट एनालिटिक्स आपने उसके ऊपर इस्टेब्लिश किया। बट इट डज नॉट, जो भी उस वक्त हम करते थे, इट कुडंट कंसिडर कि आपका ओवरऑल मार्केट का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी एक एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट किस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल विद द कोविड, अगर मैंने ये देखना हो कि द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, कि आपका उसके ऊपर आपका जो भी जो कोविड का इम्पैक्ट था, वो स्टोर डिस्ट्रप्शन उसकी वजह से कॉज हुई थी रिटेल सेक्टर में कि नहीं हुई थी। आपको uh, स्पाइक भी नजर आएगा लोगों ने जब वो स्टॉक करना शुरू किया था। एट द सेम टाइम इफ यू रन दैट, जो आपका जो भी वो फ्लो था उसके स्टार्ट करें, साथ आपने ये भी देखा कि उसके बाद आपके गैप भी आए, लोगों की बाइंग पावर जो है वो कुछ लोगों की कम भी हुई, उस वजह से भी जो लोगों ने जो लग्जरी आइटम्स थे या जो आपके वो कोर फूड आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स नहीं थे, लोगों ने उसके ऊपर उनको वो बाय करना कम किया। तो ये इसका ये बाय जो थ्योरी तो हम लोगों को पता था, एवरीवन नोज कि ये इस तरह था, बट मेकिंग इट पॉसिबल विद द एविडेंस कि उसका ट्रेंड किस तरह फॉलो हुआ, दैट वी मेड इट पॉसिबल थ्रू यूजिंग दी आपकी एक्सटर्नल डाटा बाय कनेक्टिंग इट on a platform like Snowflake, या जो भी आपके क्लाउड या डाटा प्रोसेसिंग जी, प्रोवाइडर या एक्सटर्नल सोर्स हैं। और आपका जो दूसरा एडवांटेज जो सबसे बड़ा है, which I consider one of the key benefits of using Databricks like or Snowflake like data processing tools, कि you are not limited to कि आपने किस फॉर्म टाइप का डाटा प्रोसेस करना है, एंड यू आर आल्सो नॉट लिमिटेड टू कि आपको एक वक्त में कितना हार्डवेयर चाहिए। right. पॉइंट इन टाइम यू आर यूजिंग ओनली, कि आपको कि आप 2 मशीन्स यूज कर रहे हो, एंड फॉर द नेक्स्ट आवर यू कुड एंड अप यूजिंग विद 64 machines together to process et cetera. So Right. that time to market, getting time to market or getting an informed decision based on the data facts, that could easily be achievable. If you use horizontally scalable data processing.
ओके, ओके। सो यंग प्रोफेशनल्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? Young professionals. So I'll start. I would like to start with the you could say, I mean, last semester students first, though they are not professional yet. But उसमें जो Okay. सबसे बड़ा जो मैं कंसिडर करता हूँ, which I as I have been interviewed, I would say more than 1500 people throughout my career. तो जो मैंने जो सबसे बड़ी मैंने प्रॉब्लम अभी देखी है, एंड आई वुड लाइक टू हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, आई मीन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द यंग प्रोफेशनल्स, मे बी वी कुड प्लान इट सेपरेटली। जो जी। सबसे बड़ी मैंने प्रॉब्लम देखी है, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब आपका, ओके। which leaves heavy impact on their final project, जो कि आपको ने जो कुछ भी ओवर द इयर्स आप लोगों ने सीखा हुआ है, उसको वो हम्म। काफ़ी जो है ना वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप कहेंगे उसको बैडली इम्पैक्ट करता है। या तो आप किसी एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हो जिसमें वो ग्रुप की बाकी की एफर्ट जो है दैट बिकम योर फाइनल प्रोजेक्ट, एंड व्हेन यू गो हम्म। इनटू इंडस्ट्री आपको वो नहीं पता कि आपको सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स पता है, लेकिन उनको आपने यूटिलाइज कैसे करके आपने एक लेगो कैसे बनानी है या आपने घर कैसे जी। कंस्ट्रक्ट करना है उसको आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसका कि आपके जो कैरियर के फर्स्ट 3 इयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो लर्निंग है आपकी, यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, स्पेशली विद द स्प्रेड ऑफ आई मीन करंट टेक्नोलॉजी स्प्रेड, that's is fine and even better to focus on one particular technology। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट जो आपको बैचलर में 4 साल या मास्टर्स में आगे आपने जी। 2 साल पढ़े हैं, तो आपको उनको यूटिलाइज करते हुए यू शुड एक्सप्लोर के बाकी पार्ट कैसे काम करता है। इफ देयर इज अ टीम ऑफ 6 people, 2 are responsible for the front end, 2 for the mid tier and 2 ultimately for the back end, you should also know to some extent कि वो बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। बेशक आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, डेवलप नहीं कर रहे, बट यू शुड नो कि वो कैसे। एंड ऑल्सो एब्स जब आप इस एज में होते हैं, जब आप अपने सीनियर्स के साथ काम करते हैं, ऑलवेज देयर ऑलवेज बी आई मीन एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम सीनियर्स। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वो आपको सीनियर को नॉलेज आपको कन्वे कर रहे हैं, व्हेन टू सीनियर्स talk to each other, they are जी। participating, working for another client, the way they talk, that they try to convince client on certain things, that is also part of your learning as well। तो आपने जो भी एब्सोल्युटली। आप स्किल्स भी स्टैब्लिश करना, वो आपका वो भी उतना ही ज़रूरी है, बीइंग अ टेक गाय एज वेल, कि आपको you could speak, you could tell that, I mean, that was the problem, this is how I solved this problem, and this is how, I mean, it actually reduces the overall time। तो ये सारा कुछ आप जब आप जो कर रहे हो उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते वेरी वेल सेड। So, Mr. Zafar, in the end, I would like to ask, how's going your experience with CXO Global Forum? हो। हाँ, yes, so we are still, I would say I'm still learning to find the, I mean, best uh, the maximum potential of it. But definitely one thing I have noticed so for sure, that without investing heavily on the business development, we could reach out to C-level positions, and not we I mean we also we could help each other through this जी। platform to complement our skills। so if we are competent with we have competency in data processing, someone else could have processing using the microcontrollers as well, and if we combine them together we could end up with a unique product। so this is how I see. I mean, we will be utilizing the maximum potential of जी। CxO Global, and I also believe that, I mean, it's time to share our experience with the audience, especially, I mean, who are trying to uh, ma-
to set up a startup, or they are already started a startup, they are looking for the help. That would also be, I mean, one of the areas I would like to help people. Right, right. So, thank you very much, Mr. Zafar, and it has been a very insightful discussion with you. And I hope our viewers will learn a lot from it. And we wish you more and more success in your life. Thank Yeah, you. thank you so much, Zubia, and thank you so much, listeners and viewers, being with us. Okay. So, viewers, this is it for today. Inshallah, see you soon with some another amazing personality. Till then, take care. Allah Hafiz. Love.